Here we are continuing the test yourself from the chapter solution, and the question here is explain how you would separate salt from seawater and what happens to the water. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने किसी भी सॉल्युबल सॉल्यूट को वाटर से सेपरेट करना है तो हम उसको बॉईल कर सकते हैं. वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेपरेट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू स्टीम. और अगर आप ओपन बॉइलिंग करें तो ऑब्वियसली दैट स्टीम एंटर्ड इनटू द air. So you can easily see in the diagram as well, and you can write it in the way the evaporation boiling method is used to separate salt from seawater. Water converted into steam and entered into the environment. So this is answer both the questions. Next, describe how you would separate a mixture of sugar and chalk. First of all, you can clearly see that we have two solutes here, that one is soluble and the other one is insoluble. तो जो soluble solute है हम उसे boiling से अलग करेंगे और जो insoluble है उसे हम अलग करेंगे by filtration method. But we start from the filtration method. सबसे पहले हम insoluble को अलग करेंगे क्योंकि अगर आप पहले boiling कर लेंगे तो जो salt है और sand है they both will be mixed और उनको separate करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा. So what we will do the filtration first. So there we have three steps: solution formation, then filtration, and then boiling. At the first step, add water into the mixture of sugar and chalk and stir it well. Then, in the next step, pour the solution through the filter paper. Sugar solution will pass through, but the chalk will be trapped into the filter paper. And in third step, heat the sugar solution. Water will be evaporated and dry sugar crystals are left. You can see here that here we are forming the solution. Then in the next step, we are doing the filtration. We are pouring the solution through the filter paper. और filter paper में आपकी chalk जो है वो residue के तौर पे रुक रहा है और बाकी चीज़ें pass हो रही हैं. And then in the last, we can do the boiling step. Next question is to obtain pure water from ink. What color will the steam be? अगर आप अपने पानी में इंक को मिक्स किया और उसके बाद आप उसे बॉईल करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवेपोरेट हो जाएगा, बट इंक रिमेन इन योर बीकर. तो ऑब्वियसली क्योंकि 100 डिग्री पर सिर्फ पानी एवेपोरेट हो रहा है, इंक एवेपोरेट नहीं हो रही, तो जो स्टीम का कलर है वो ऑब्वियसली वही रहेगा जो पानी का कलर होता है, मतलब कलरलेस होगा. The ink does not boil, it will remain in the beaker, so the steam is colorless because it is made of a water molecule present in the solution rather than ink. What name is given to pure water? Give two uses of this water. प्योर वाटर जो हम करते हैं डिस्टिलेशन से उसको हम डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज वाटर कहते हैं, और इसके बहुत ही मेजर यूजेस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और लैब एक्सपेरिमेंट्स में. हम प्रेफर करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू यूज डिस्टिल वाटर. डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जिसमें हम डिस्टिल वाटर प्रिपेयर करते हैं, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. किस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए और कौन एनर्जी रिलीज करता है? सो बॉइलिंग, वी ऑलवेज नो कि बॉइलिंग में एनर्जी चाहिए. आप हीट देंगे सिस्टम को तो सिस्टम बॉयल होगा. और कंडेंसेशन में आपके वही जो बॉइल्ड पार्टिकल्स हैं, जो स्टीम है, दे कोलाइड विद वन अनदर, द वॉल ऑफ द कंटेनर अपनी एनर्जी जो है वो बाहर जाने देते हैं, एंड देन दे कंडेंस एंड कन्वर्टेड अगेन इनटू वाटर. सो कंडेंसेशन मींस गिव्स आउट एनर्जी. Describe how you would separate a solution of liquid A with 56 degrees centigrade boiling point, B with 72, and liquid B with 100. So 100 जो है वो obviously water है. अब हमारे पास तीन लिक्विड्स हैं जो मिक्स हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. सो हम क्या करेंगे, हम इन्हें बॉयल होने देंगे. हाँ, जब टेम्परेचर आपका 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो लिक्विड ए बॉयल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, वेपर्स में, एंड देन लिक्विड बी 72 डिग्री पर बॉयल हो जाएगा, converted into vapors, and then later on liquid B. तो इस प्रोसेस को जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेशन होती है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. सो वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, एंड हियर वी हैव द सिस्टम टू फॉलो. ये जो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, जो बर्नर के ऊपर हमने फिक्स की है, इसमें हम सोल्यूशन डालेंगे, हम उसे हीट करेंगे. 56 पर पहला लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा, उसके वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे, वो ट्यूब में से पास करके दूसरी तरफ जाएंगे. यहाँ पर वाटर इन और वाटर आउट हो रहा है, ये ठंडा पानी कंडेंसेशन में हेल्प करेगा. और वही जो आपकी वेपर है दैट कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड फेज, एंड सो ऑन. हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे एंड सेपरेट ऑल द liquids. So the fractional distillation process involves repeated condensation and distillation. Its basic principle is that different liquids evaporate and boil at different temperatures. So during heating the mixture, the substance, which has a lower boiling point, will start to boil first and hence convert it to vapors. After condensation, the liquid collected in a beaker and so on. We've done the process. What causes a color in ink to move across absorbent paper? Absorbent paper chromatography एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. बाय द वे वी कैन आल्सो सेपरेट नॉन कलर सब्सटेंसेस, उसको फिर हम डिफरेंट वे में थोड़ा कर लेते हैं. बट इसमें
जो absorbent paper है, for example you are using filter paper, तो filter paper के ऊपर filter paper absorbent surface है, अब इसे कोई move करवाने वाला चाहिए, so use certain solvent। जब हम solvent उसके ऊपर डालेंगे तो solvent travel करेगा filter paper में, उसके साथ colors भी करेंगे। So the color needing move across absorbent paper due to the solvent. Water is used as solvent and filter paper is the absorbent surface to separate the colors in black ink. As the water moves across the filter paper, it will carry the colors with it. So पानी जैसे जैसे खुद move करेगा, travel करेगा, colors भी करेंगे। Explain why some colors move farther than others. We are using two things here, absorbent surface and solvent. वो मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्बेंट सरफेस के साथ ज़्यादा एडहेयर होंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो स्टे करेंगे, और जो सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, वो दूर तक मूव करेंगे। So some colors move farther than others because some colors dissolve in solvent easier and are carried by the water. Some colors are more attracted to the absorbent surface and move slowly. Usually smaller molecules will move farther than larger ones. Next question here is what is ascending paper chromatography? It's just a paper chromatography, बस आपने अपने पेपर को ascending mode पर रखना है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आपकी जो है वो ट्रेवल करते हैं कलर्स। So the type of paper chromatography in which the solvent rises up is known as ascending paper chromatography. So when the water rises up, color also rises up. Suggest why a baseline is drawn on the paper before ascending paper chromatography begins. हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप रेस स्टार्ट करते हैं, तो आप एक स्टार्टिंग लाइन अपने हर पार्टिसिपेंट के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत बाद से दौड़ में शामिल हो रहा है और कोई बहुत पहले से हो रहा है। So the starting line must be same and same here. A baseline is drawn on the paper before ascending paper chromatography begins to mark the place from which the separation begins. At the end, the distance traveled by each color needs to be measured to determine which one moved farther, and that is only possible if they are starting from the same point, like we are doing the race. So you'll be a paper chromatography, and you have to draw the line before putting the dots on it. Suggest how sending paper chromatography could be adapted to separate colorless substances such as amino acids. कलरलेस सब्सटेंसेस को आप सेपरेट करेंगे, उसके बाद आप कोई भी आइडेंटिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं और आपके कलर्स ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाइंग एजेंट रिएक्ट करता है टू द मटेरियल इन द एब्जॉर्बेंट सरफेस और कलर्स अपीयर हो जाते हैं। So a mixture of unknown amino acids can be separated and identified by using sending paper chromatography. The position of the amino acids can be detected by spraying the chromatography with ninhydrin. It reacts with amino acids and give highly colored products. So this is all.